लास्ट सेक्शन कौन सा डिस्कस किया था फ्रेंड? लास्ट सेक्शन जो हमने डिस्कस किया था दैट इज बेसिकली फ्रेंड्स called as section number 194I, which is TDS on rent. Yes. So TDS on rent में क्या पढ़ा था फ्रेंड्स? Did we discuss in TDS on rent basically? See, if we have taken any kind of property, office premises on rent, yes, अगर हमने कोई भी ऑफिस प्रीमाइसेस प्रॉपर्टी रेंट पे ली है तो while making payment of rent to owner or landlord, ओनर या लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते वक्त we have to deduct basically TDS under section called as TDS under section called as 194I, which is TDS on rent. Yes, friends. And what is the threshold limit, friends? Threshold limit basically, friends, under section 194I, threshold limit is 2,40,000. Yes. And the rate is how much, man? 2 lakh. Rate is 10%. Threshold limit is 2,40,000. Yes. Now, friends, जैसा कि हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हमारी कंपनी है. हमने ओनर से एक ऑफिस प्रीमाइसेस रेंट पे लिया है फ्रेंड्स. जैसे मेरे पास मुंबई में प्रॉपर्टी है तो मैंने वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कॉर्पोरेट कंपनी है, उनको मैंने यूज करने के लिए दे दिया. यस सर, उनको मैंने यूज करने के लिए दे दिया. मेरा ऑफिस प्रीमाइसेस यूज कर रहे हैं. अब ना फ्रेंड्स, मेरे ऑफिस प्रीमाइसेस में देयर वर सो मेनी व्हाट इज इट, चेयर्स वर देयर, डेस्क वगैरह था, टेबल्स वर देयर. दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू ओनर ओनली. वो भी ओनर का ही है, मेरा है. सो रिलायंस सेज आई वांटेड टू यूज दैट आल्सो. रिलायंस वाले बोलते हैं जिन्होंने रेंट पे लिया था, वो बोलता है कि मुझे वो भी यूज करना है. क्या यूज करना है फ्रेंड? दे सेज आई वांटेड टू यूज आवर चेयर्स, डेस्क, फर्नीचर्स एंड ऑल दैट. मैंने बोला यस यू कैन यूज इट, कोई इशू नहीं, यू ऑल कैन यूज, बट you have to pay rent. So friends, try to understand, if we are using furnitures, I mean, अगर हमने कोई furniture and pictures रेंट पे लिया है, furnitures and pictures अगर हमने रेंट पे, if we are using furniture and pictures of someone else, so in that scenario also TDS will be applicable under section 194I only. Under section 194I only, and the rate will be friend 10% only. Rate will be 10% only. So friend, 10% TDS is basically applicable. 10% TDS is basically applicable, friends, if we are using 10% TDS basically, friend, will be applicable if we are basically using what is it? Furnitures and fixtures and land and building, friends. Office premises तो क्या बोलते हैं हम लोग? Land and building. So friends, this we have to remember. 10% TDS is applicable if we have taken any furniture on rent or any office premises on rent. So furnitures and fixtures, office premises, friends. Office premises is called as land and building. So in both the scenario, friends, in both the scenario, TDS rate will be 10%. In both the scenario, TDS rate will be 10%. In both the scenario, friends, TDS rate will be basically your 10% only, right? Okay. Okay. One more thing, friends. One more thing which we have to remember here is that अब हमने ना फ्रेंड्स, we have taken office on rent.
हम ओनर का ऑफिस यूज करें, वी आर पेइंग रेंट फॉर दैट। और क्या यूज करें फ्रेंड्स, वी आर यूजिंग ओनर्स ऑफिस, वी आर यूजिंग दियर फर्नीचर्स, उनका फर्नीचर्स भी यूज करें फ्रेंड्स। यस, वी आर यूजिंग ओनर्स ऑफिस, वी आर यूजिंग the furnitures also we are paying. So we are paying rent for, we are paying rent for office, we are paying rent for furniture as well। ऑफिस का भी रेंट पे कर है, फर्नीचर का भी रेंट पे कर है, दोनों का रेंट पे कर रहे हैं। तो अपने को दोनों पे क्या करना है फ्रेंड्स, टीडीएस डिडक्ट करना है। वी हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑन बोथ द एलिमेंट्स, रेंट which is paid for use of land and building, and rent which is paid for use of furnitures and fixtures। We have to basically deduct TDS on both the elements। अपने को टीडीएस बेसिकली फ्रेंड दोनों पे क्या करना है, डिडक्ट करना है। ओके, सेकंड थिंग, सेकंड थिंग क्या ले सकते हैं फ्रेंड्स, या अब देखिए फ्रेंड, हमने जो रेंट पे ऑफिस लिया था, देयर वर प्रोजेक्टर आल्सो, बहुत सारे प्रोजेक्टर वर देयर, प्रोजेक्टर थे, एयर कंडीशनर्स वर देयर। ओनर जिसका हम ऑफिस यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, इन देयर ऑफिस प्रोजेक्टर वर देयर, एयर कंडीशनर्स वर देयर, getting it, generator friends, because of to avoid electricity issues, they have a generator also। So air conditioners, generators, water purifiers, projectors friends, so that is also there in the owner's premises। owner के premises में वो भी था, क्या क्या था friends, as we discussed, water purifier, right, generator, air conditioners, projector, that is also there। So हमने ओनर को क्या बोला, ओनर आई वांट टू यूज दिस आल्सो, मुझे ये भी आपका यूज करना है, and we will pay rent for that also। Yes, we will pay rent for that also। Now friends, now this time we are using what, ओनर का देखो फ्रेंड्स, कुछ भी छुट्टी नहीं रहा है, सब यूज कर रहे हैं वहां पे। yes, we are using everything, everything we are using, ऑफिस यूज कर रहे हैं उसका, फर्नीचर्स यूज कर रहे हैं, अब वाटर प्यूरिफायर, जनरेटर, एयर कंडीशनर्स, प्रोजेक्टर्स, that is also we are using friends। Nothing comes free of cost, nothing comes free of cost, कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा friend। For everything we have to pay the rent। So remember friends, if we have taken, if we have taken water purifier, generator, air conditioner, projectors, this is called as friend machineries। वाटर प्यूरिफायर हो गया फ्रेंड्स, जनरेटर हो गया, एयर कंडीशनर्स वगैरह हो गए, प्रोजेक्टर्स, ये सब क्या फ्रेंड, these are called as machineries, right? These are basically called as machinery। So try to understand friends, if we have taken water purifier, generator, air conditioners, this is called as plant and machineries। basically क्या बोलेंगे इसको हम लोग, plant and machineries। so if we have taken any plant and machineries on rent, अगर हमने कोई plant and machinery rent पर लिया है friends, in that scenario TDS will be 2%। in that scenario friends, your TDS will be how much, 2%, getting it? So this we have to remember friends, this basically we have to remember। if we have taken any water purifier, generator, any kind of plant and machinery on rent, so TDS will be applicable at the rate of 2%। 2% से applicable होगा TDS। So under section 194 I, friends, under section 194 I, there is two rates of TDS, 10% and 2%। 10% friends, 10% TDS will be applicable for use of land and building and furnitures and fixtures। 10% will be applicable for use of, क्या यूज करें हम लोग, ओनर का
लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर्स एंड पिक्चर्स अगर हम यूज करें तो TDS will be 10% and 2% TDS will be applicable, friends, in case of what do you say? Rent is paid for use of any plant and machinery. So TDS rate will be friends 2%. TDS rate will be in that scenario 2%. So please remember this. ये याद रखना 194 हमें दो रेट है फ्रेंड्स. तो अब नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं फ्रेंड्स. तो करना है नेक्स्ट सेक्शन जो है बेसिकली फ्रेंड्स that is called as section 194C. This is also one of the very important 194C we discussed or not. I think we have not discussed 194C. No issue, friends. So let's discuss now. 194C is basically friends TDS on contract. Section 194C is basically friends TDS on contract. TDS on contract. Okay. एग्जाम्पल से समझेंगे फ्रेंड्स TDS on contract होता क्या है. So again friends, our company is Reliance. Reliance Industries Limited. We are involved in so kind of business. हमारी जो कंपनी हर एक टाइप का बिजनेस, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिजनेस कर रहे हैं फ्रेंड. अब ना फ्रेंड बिजनेस में हाउ डू वी क्रिएट अवेयरनेस अमंग्स कस्टमर. हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, हम अपने सर्विसेज के बारे में कस्टमर्स को कैसे बताते हैं फ्रेंड्स. तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसके लिए हम अपनी कंपनी के लिए क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, मार्केटिंग करते हैं. तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज डन एडवर्टाइजमेंट. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड whatever goods they are selling or whatever services they are providing friends, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, they have taken advertisements. एंड एडवर्टाइजमेंट वो किससे करा रहे हैं फ्रेंड्स, एड एजेंसी बोलते हैं फ्रेंड्स. एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती है. तो फ्रेंड लेट्स say there is a advertisement company called as Bright Outdoor. Bright Outdoor Media Private. Bright Outdoor Media Private Limited is an ad agency, advertisement company है friend. So ये ब्राइट आउटडोर बोलती रिलायंस को कि हम आपसे 5 लाख रुपीज लेंगे. एंड मुंबई के बड़े बड़े जो होर्डिंग्स है, बोर्ड वगैरह है, रोड साइड में जो बोर्ड वगैरह होर्डिंग्स है, वहां पे आपकी कंपनी का एक बड़ा सा एडवर्टीजमेंट छपेगा. यस, पब्लिश होगा. एंड वॉट एवर लोकल ट्रेन, जितने भी ट्रेन है, ऑल द लोकल ट्रेन विच आर ऑपरेटिंग हियर इन मुंबई, देयर विल बी अगेन होर्डिंग ऑफ योर कंपनी. ये सर्विस कौन दे रहा है? दिस इज एडवर्टीजमेंट सर्विसेज. हु इज प्रोवाइडिंग दिस एडवर्टीजमेंट सर्विसेज? This advertisement services is provided by whom, friends? Bright Outdoor Media Private. So Bright Outdoor says for this advertisement services, our charges will be 5 lakhs. Listen. Who will pay this 5 lakhs, friends? Reliance Industries Limited ने कंपनी ने करा है एडवर्टाइजिंग. So they will pay 5 lakhs to ad agency. कौन सी ad agency? Bright Outdoor. Listen, they will pay 5 lakhs to ad agency which is Bright Outdoor को they will pay. So friends, remember, while making payment for any advertisement expenses, while making payment for any advertisement expenses, TDS will be deducted under section 194C. So who will be deducted here, friends? Who will be deducted here? Reliance Industries Limited pays 5 lakhs, so they are deducted. Who is deducting? This ad agency, ad firm, Bright Outdoor, they are deductive, friends. Yes,
Reliance Industries Limited is a deductor, and this ad agency, this is an deductee, right? So friends, remember, whenever we receive any advertisement services, whenever we receive any advertisement services while making payment to ad company, ad agency, we have to deduct TDS under section basically 194. 194. Friends, let's decide कौन से रेट से TDS deduct होगा under 194C. At what rate TDS will be deducted under section 194C, friends? Let's decide at what rate TDS will be applicable. So friends, under section 194C, basically there are two rates, 1% and 2%. Section 194C में कितना रेट है friends? Two rate है, 1% and 2%. When we should apply 1%, when we should apply 2%, कैसे decide करें फिर? 1% कहाँ पे apply करना है, 2% कैसे कहाँ पे apply करना है? So try to understand friends. If the deductee जिसको आप पे कर रहे हैं, if the deductee जिसको अपने को पेमेंट करना है फ्रेंड्स, if the deductee is individual or HUF, friends ये यहाँ पे they are deductee. If the deductee is individual or HUF, then TDS is 1%. 1%. नहीं तो अगर फ्रेंड्स इंडिविजुअल HUF नहीं है तो 2%. लाइक इंडिविजुअल HUF नहीं है तो फ्रेंड्स मीन्स क्या हो सकते हैं, व्हाट इज अनदर पॉसिबिलिटीज? सर पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकते हैं फ्रेंड्स. यस, कंपनीज हो सकते हैं. यस, in that scenario, yes friends, in that scenario TDS will be how much? 2%, right? So either 1% or 2%. 1% कब आएगा फ्रेंड? If the payment is made to individual and HF. 2% if the payment is made to partnership firm and company. अगर डिडक्टी इंडिविजुअल एंड HF है फ्रेंड्स तो कितने डिडक्ट करोगे? 1%. और अगर डिडक्टी पार्टनरशिप फर्म है और कंपनी है तो TDS विल बी 2%. तो यहाँ पे डिसाइड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना आएगा TDS. अपने केस में हम ब्राइट आउटडोर को पेमेंट कर रहे हैं. ब्राइट आउटडोर, लुक एट दियर नेम, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इज देयर. एंड में वर्ड क्या आ रहा है? प्राइवेट लिमिटेड. फर्स्ट थिंग, प्राइवेट लिमिटेड है मींस इट इज अ कंपनी. एंड सेकंड फ्रेंड्स, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? एड एजेंसी अपने को इनवॉइस देगी कि हमने आपकी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट किया है. ऑन इनवॉइस दे विल मेंशन देयर पैन नंबर. इनवॉइस पे क्या मेंशन करेंगे उनका ये लोग? पैन नंबर. यस फ्रेंड. तो पैन नंबर में वी हैव टू रेफर फोर्थ अल्फाबेट, राइट? इन पैन नंबर वी हैव टू रेफर फोर्थ अल्फाबेट. पैन नंबर में अपने को क्या देखना है फ्रेंड्स? फोर्थ अल्फाबेट देखना है. यस, फोर्थ अल्फाबेटिक बेसिस के, फोर्थ अल्फाबेट के बेसिस पे अपने को डिसाइड करना है कि इंडिविजुअल है या HUF है. करेंगे तो वी हैव टू बेसिकली रेफर फोर्थ अल्फाबेट. ओके, आई विल शो यू फ्रेंड्स वन एग्जांपल कैसे आइडेंटिफाई करोगे. हम प्रोजेक्ट सॉल्व करेंगे. वी विल सॉल्व द एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट ऑल्सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग, but just for your understanding, I will show you one invoice. Look at here, friends. All of you, let's have a look here. देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ABP प्राइवेट लिमिटेड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है. उसने किसको सर्विस दी है? ये कंपनी को सर्विस दी है ना? कितना चार्ज कर रहे हैं फ्रेंड? ABP लिमिटेड इनसे कितना चार्ज कर रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए? 9 लाख. अच्छा, ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे डिस्प्ले हुआ है? टेलीग्राफ न्यूज़पेपर पे पब्लिश हुआ है, 7th पेज पे. तो ये देखो, पहला
प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आ गया, मतलब कंपनी दूसरा फ्रेंड्स, ये देखो जीएसटी नंबर जो होता है ना फ्रेंड, जीएसटी नंबर, ये देखो ये जीएसटी नंबर है, हम पढ़ेंगे जीएसटी भी। 19 स्टेट कोड होता है। ये पैन नंबर है, देखो फ्रेंड, 5 अल्फाबेट, AAACT 5 अल्फाबेट, 1507, 4 नंबर, NC 1 अल्फाबेट, ये पैन नंबर है फ्रेंड। AAACT 1507C, दिस इज अ पैन नंबर। तो पैन नंबर में फोर्थ अल्फाबेट देखिए, C stands for कंपनी, C stands for कंपनी। तो अगर फ्रेंड्स इंडिविजुअल एंड एचएफ को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो कितना आएगा टीडीएस? 1%। और अगर हम पेमेंट पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी को कर रहे हैं, तो कितना आएगा टीडीएस फ्रेंड? 2%। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करें फ्रेंड? ब्राइट आउटडोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड मतलब क्या हुआ? पेमेंट जिसको करे कौन हुआ ये फ्रेंड्स? दे आर कंपनी। डिडक्टी कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? कंपनी। therefore TDS rate will be 2%. Yes, TDS rate will be 2%. अब फ्रेंड टीडीएस डिडक्ट करने के पहले पहले वो डिसाइड करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट अंडर सेक्शन 194C इज सिंगल पेमेंट। सिंगल पेमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड? एक इनवॉइस का पेमेंट करो, एक इनवॉइस का पेमेंट कर रहे हो। इफ द सिंगल पेमेंट इज मोर देन 30,000, single payment should be how much friends? More than 30,000, TDS will be applicable। एक इनवॉइस का पेमेंट कर रहे हैं फ्रेंड्स, और उसका वैल्यू कितना है? मोर देन 30,000 है, मोर देन 30,000 है, तो टीडीएस विल बी अप्लीकेबल। यस, if the single payment is made for single invoice and invoice value is more than 30,000, then the TDS will be applicable। यहाँ पे देखो TDS applicable होगा फ्रेंड्स। यस, होगा। why फ्रेंड्स? why TDS is applicable? Because more than 30,000, invoice value is more than 30,000। कौन से रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है अपने को? प्राइट आउटडोर प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी। यस, कंपनी है तो 2%। तो डिडक्ट कर लो टीडीएस the rate of 2%। How much friends? TDS will be how much? 2% of 5 lakh, 10,000। 10,000 डिडक्ट करके एड फर्म को, एड एजेंसी को, राइट आउटडोर को कितना पे करेंगे हम लोग? उन्होंने एडवर्टीजमेंट का इनवॉइस कितने का दिया फ्रेंड? दे हैव गिवन एडवर्टीजमेंट इनवॉइस ऑफ 5 lakhs, but how much we will make? हमने how much we are going to pay them? पे कितना करेंगे? Not 5 lakh, we will pay them only how much? 4,90,000, which is net payment। Yes, how much we are going to pay them? Instead of 5 lakhs, we will pay them only 4,90,000। किसको 4,90,000 पे करना है? एड एजेंसी को, एड फर्म को, एडवर्टीजमेंट कंपनी को। we will pay only how much friends? After deducting 10,000 TDS, 4,90,000। So friends, as I told you, whenever you are learning TDS, think from deductor's point of view। डिडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। सोचिए what should be the entry from deductor's point of view? What should be the entry? Hmm? Say suppose this invoice is received in on 31st July only। अपने को ये इनवॉइस कौन से मंथ में मिला फ्रेंड्स? जुलाई, 31st जुलाई को मिला। We got invoice from ad agency in the month of July only। So as a deductor friends, as a deductor, what entry we are going to pass? As a deductor, what entry we are going to pass? हम क्या entry pass करेंगे? As a deductor, what entry we should pass here? Yes, so try to understand friends। Advertisement is an expense for us। अपने लिए क्या friends? Expense है, expenses are debited।
Yes, expenses are basically debited. How much? How much, friends? 5 lakhs. Friends, अपने भी expense तो 5 lakhs ही है. Why? 4,90,000 we have to pay to service receiver, service provider. Sorry, 4,90,000 हम किसको पे करें? सर्विस प्रोवाइडर. 10,000 किसको पे करें? टू गवर्नमेंट. सो फॉर अस टोटल आउटफ्लो हाउ मच? हमारे जेब से आउटफ्लो, हमारे जेब से पैसा जा कितना रहा है? 5 lakhs only. TDS we have deducted that TDS we have to pay to the government, so it is a liability. Liability we have to credit. Liability को क्या करना है फ्रेंड्स? क्रेडिट करना है. How much is the TDS? 10,000. Now friends, remaining 4,90,000 we have to again, 4,90,000 we have to again pay to whom? Bright outdoor. Again अपने को पे करना है. पे करना है तो again liability. Liability always has credit effect. Liability हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स? क्रेडिट इफेक्ट. किसको पे करना है? 4,90,000 whom we have to pay. 4,90,000 we have to pay to this ad agency. So it's a liability for us, and liability always has credit effect. Yes. Much? कितना पे करेंगे भाई? 4,90,000. Friends, as soon as you credit, यहाँ पे देखो हमने ब्राइट आउटडोर के अकाउंट को कौन सा इफेक्ट किया? क्रेडिट फ्रेंड्स. So whenever you credit any personal account in your book, जब भी आप किसी पर्सनल अकाउंट को फ्रेंड्स याद रखना, आप अपने बुक्स में क्रेडिट करते हो, तो इट विल बिकम क्रेडिटर. अपने लिए क्या बन जाता है? क्रेडिटर. हमने यहाँ पे ब्राइट आउटडोर के अकाउंट को क्रेडिट किया, मींस दे आर क्रेडिटर फॉर अस. क्रेडिटर मींस वी हैव टू पे देम. So as soon as you credit any personal account in your books, that person, that company, that organization becomes creditor for you. आपके लिए क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है. Yes. So if you want to show any supplier, any vendor as a creditor, तो क्रेडिटर शो करना है, तो क्रेडिट दिया रखा. क्रेडिट कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा? दे विल बिकम क्रेडिटर फॉर यू. So this is TDS of 10,000 deducted in the month of July. Due date of TDS payment. Last session में हमने पढ़ा था. Last session. What is the due date of payment of TDS? Due date of payment of TDS is 7th of next month. So this is we have deducted in July. 7th of next month. July. After July, next month is August. So last to last, friend, we have to pay this TDS to the government by 7th August. So friends, whatever TDS we have deducted in the month of July, friends, whatever TDS we have deducted in the month, that has to be paid by 7th of next month. That is 7th of August. 1st July से लेके फ्रेंड्स 31st July तक जो भी TDS डिडक्ट किया है, गवर्नमेंट को कब तक पे कर देना है? नेक्स्ट मंथ के 7th तक. फर्स्ट से लेके 7th तक. फ्रॉम 1st to 7th you can pay on any day. But last to last, you have to make sure that it is paid by 7th of next month. Okay. So what should be the entry once paid? Once paid, what should be the entry? यहाँ पे liability is credited. Liability को credit किया था. Once it is paid, so your liability is getting cancelled. Your liability is getting paid. So liability is getting cancelled. So it is a credited. If you wanted to cancel your liability, if you wanted to discharge your liability, once it is discharged, you have to debit it. जैसे ही आप liability को debit कर देगा, फिर मैं आपकी liability cancel हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. Yes. How much? बैंक को क्रेडिट की प्रेफरेंस. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पैसा कहाँ से गया? अपने बैंक से गया 10,000.
As 10,000 is money, 10,000 is deducted from bank. The rule says credit what goes out. When your money goes from your business, credit it. So 10,000 goes from our business, from bank account. So we have credited the bank. How much? 10,000. It's 10,000. So this we have to remember, friend, that uh, whenever any advertisement services are received, whenever any advertisement services are received, while making payment to ad agency, we have to deduct TDS under section 194. We have to basically deduct TDS under section called as 194. Let's take another example, which is covered under section 194. Let's take another example. Reliance Industries Limited, friend. We have corporate office in Mumbai. In Mumbai office, friends, there are so many computers in our office. अपने office में बहुत सारे computers है, friends. So as you keep on using these systems, friends, over the period of time, some parts doesn't work properly. There is some kind of errors. Some parts gets malfunctioning. Certain software don't work. So what we can do, friends? What we can do? We have hired one service provider, Satyam Computers. Satyam Computers अपने को क्या बोलता है? I will charge 50,000 rupees. ये बोलता है, इसको बोलता है फ्रेंड रिलायंस को. I will charge 50,000 rupees from you, and I will come to your office 4 times in a what do you say? In a year. Satyam Computer says my charges is 50,000. I will visit to your office 4 times in one financial year, and during every visit I will check all the system. जब भी मैं विजिट करने आऊंगा आपके सारे सिस्टम को चेक करूंगा, ओपन करूंगा, कुछ पार्ट्स खराब होगा तो आई विल रिप्लेस इट, एंड इफ देयर इज एनी एरर, कोई फंक्शंस काम नहीं करे तो आई विल डू द रिपेयरिंग. बट उसके लिए हाउ मच वी हैव टू पे? 50,000. ये जो 50,000 हम पे कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज AMC, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. This 50,000 is called as what? AMC. AMC stands for, friends, annual maintenance contract. तो हमने ये सत्यम कंप्यूटर्स को क्या दिया, फ्रेंड्स? AMC. वी हैव गिवन AMC. क्या सर्विस मिल रहा है अपने को 50,000 में? Satyam Computer will visit our office 4 times in a year. They will check all the system. If any systems are not working, they will replace the required part. If any parts are, which is not insane, it is in good condition, and if certain repairings are required, so they will do the servicing. Repairing also they will do, but we have to pay 50,000 for that. So this is called as, friends, annual maintenance contract. So while making 50,000, while making payment of 50,000, 50,000 कौन pay करेगा, friends? Reliance will pay. To whom? Satyam. Again, Reliance will deduct the TDS under which section? Section will be the same. Section will be the same under section called as 194. Under section called as 194. Similarly, friends, we can give AMC for repairs of computers. Office में computer होते हैं ना, we can give AMC for computers. We can give AMC for air conditioners. We can give AMC for और किस लिए होता है? ऑफिस होते हैं ना फ्रेंड्स, बड़े बड़े ऑफिस, वहाँ पे टेस्ट कंट्रोल होता है फ्रेंड्स. So we can give AMC for pest control services. So friends,
as an working professional, as a candidate, we have to keep in mind that friends, whenever any kind of AMC services is available, जब भी हमने कोई AMC वगैरह का सर्विस लिया फ्रेंड्स, while making payment, friends, TDS has to be deducted under section 194C. While making payment, TDS has to be deducted under the section called as 194C. Who will deduct TDS, friends? Who will deduct TDS यहाँ पे? Who is a deductor? Reliance and this Satyam Computer, they are basically deducting. Another example. और भी example ले सकते हैं. Okay. Then Tata Steel. Tata Steel. We are manufacturing steel, iron वगैरह होते हैं ना, which is used in construction of building. Building के construction में iron use होते हैं. Iron बोलते हैं उसको हम लोग, ORES, iron material. Steel item which is used in construction. Which is used in construction. So friends, we have got order from customer. अपने को एक customer से order मिला from Gujarat. Customer is located in Gujarat and customer name is JSW Steel. Customer name is friends, JSW Steel. So Tata Steel is a seller and उनको sell करना friends. Customer is a JSW which is buyer. Tata Steel is located in Maharashtra. When Tata Steel is located in Maharashtra, JSW is located in JSW is located. Okay, okay. Yes, friend. So this JSW is located in Gujarat. Okay. So friends, our company is basically Tata Steel. We have got order from customer based in Gujarat. 10 lakh rupees का product बेचना है. We have to sold product worth rupees 10 lakh. अब सेल करना मतलब क्या करना है फ्रेंड? अपने को 10 लाख रुपीस का प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ेगा ना कस्टमर को. नाउ कस्टमर इज इन गुजरात एंड वी आर बेस्ड इन महाराष्ट्र. तो अपना प्रोडक्ट महाराष्ट्र से गुजरात जाएगा कैसे? हमारा प्रोडक्ट 10 लाख रुपए का ये प्रोडक्ट अपने को कस्टमर को डिलीवर करना है, कैसे जाएगा फ्रेंड? विल टेक हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर. Will take a help of transporter. So there is a transport company called as Jagdamba Transport Company. So Jagdamba Transport Company says अपने को क्या बोलते हैं, हम आपका प्रोडक्ट महाराष्ट्र से गुजरात में डिलीवर कर देंगे, पर उसका क्या पे करना पड़ेगा? क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको हम लोग फ्रेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फ्रेट. हाउ मच फ्रेट? Yes, freight is how much? 50,000. Freight is how much, friends? 50,000. So who will pay this 50,000 freight? Seller says, I will pay you 50,000 freight. Listen. So friends, यहाँ पे हम सेलर है, हम यहाँ पे सेलर है एंड हम अपना प्रोडक्ट डिलीवर करा रहे हैं. We were getting our goods delivered from this transport company from Maharashtra to Gujarat, and we have to pay the transportation charges of 50,000. So friend, when we make this payment of 50,000, transport charges of 50,000, so we have to deduct areas under section, same under section 194. Section will be the same.
which is section called as 194C. Yes. So friends, second service which we have to remember under section 194C is what you can say, transportation charges. So whenever we pay any transportation charges, friend, transportation charges can be at the time of sale as well as at the time of purchase. दो type का होता है friend, freight inward and outward. मतलब when we purchase the raw material, that time also we may need to pay transport charges. And when we sell the goods, that time also we have to pay transport charges, maybe. So TDS is applicable on both the scenario, whether you are paying transport charges for purchase of raw material or you are paying transport charges for sale of your finished goods. If we are paying transport charges, we have to deduct TDS. If we are paying transport charges, we have to deduct TDS, and the section is friends 194C. Section will be friends 194C. Hmm? Okay. So, yeah, another service there. बाटा क्या काम कर रही है फ्रेंड्स? व्हाट इज द बिजनेस ऑफ बाटा इंडिया? बाटा इंडिया लिमिटेड क्या बनाते हैं? दे आर मैन्युफैक्चरिंग shoes and all that. Yes. So friends, for manufacturing shoes, what is raw material? Leather and some machine भी लगता है फ्रेंड शूज वगैरह बनाने. तो बाटा वाले ने क्या किया फ्रेंड? दे हैव परचेज द शू, आई मीन लेदर परचेज कर लिया. रॉ मटेरियल दे हैव परचेज. यस, फुटवेयर. They have purchased the raw material, that is leather, and they have what you can say, machine वगैरह भी था उनके पास. Now friend, they have to start manufacturing. अब production उनको start करना चाहिए था friend, but उन्होंने क्या किया friend? They have given their work to someone else. उन्होंने अपना काम किसी और को दे दिया. So friend, there are a group of people, those who are dealing into leather group. छोटे मोटे क्या बोलते हैं फ्रेंड? वर्कर है, you can call them कारीगर. So Bata India Limited has given raw material and machinery. Bata India Limited ने इनको बोला ये raw material है, ये लेदर ले लो और ये मशीन ले लो और आप मुझे इससे शूज बना के दे दो. ये सर बाटा लिमिटेड ने लेदर और मशीन दोनों किसको दे दिया? वर्कर लोगों को. अच्छा, वो एम्प्लॉय नहीं, ये बाहर वाले लोग एम्प्लॉय नहीं है. दे आर आउटसाइडर, दे आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ बाटा इंडिया. यस, दे आर आउटसाइडर. तो बाटा इंडिया हैज गिवन देयर प्रोडक्ट, raw material and machinery, because friends मैन्युफैक्चरिंग फुटवेयर बनाने के लिए लेदर भी लगेगा और मशीन भी लगेगा. तो लेदर एंड मशीन, रॉ मटेरियल प्लस मशीनरी, बोथ दे हैव गिवन टू जॉब वर्कर. फ्रेंड्स, तो हम क्या बोलते हैं? जॉब वर्कर. बाहर वालों को दिया ना, दैट इज कॉल्ड एज जॉब वर्कर. तो ये जो प्रोसेस है ना फ्रेंड, जब हम अपना काम किसी और से करवा रहे हैं, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज जॉब वर्क. तो बेसिकली क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग? जॉब वर्क. सो बाटा इंडिया इज गेटिंग देयर वर्क डन फ्रॉम समवन एल्स. फ्रेंड्स, तो बाटा इंडिया क्या कर रही है? अपना काम किसी और से करवा रहे हैं फ्रेंड्स. दे आर गेटिंग देयर वर्क डन फ्रॉम समवन एल्स. So this is basically called as friends job work. So whenever you are getting your work done from someone else, this is a process called as job work. So friends, this job worker, they will not do, I mean they are not going to do the work for Bata India free of cost. No friends. अपने जो मेहनत करे friends, whatever efforts they are putting it, they will charge their money. They will charge their for these services. They will charge money from Bata India. What is that money friend? That is called as labor charges. Labor charges की बोलते हैं friend? See,
प्रोडक्ट बनाने के लिए व्हाट इज रिकॉर्ड, रॉ मटेरियल, मशीनरी दोनों दिया था फ्रेंड्स। ये लोगों ने सिर्फ इनके कारीगर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, कारीगर मीन्स लेबर, उनका ही चार्जेस लगेगा। अदरवाइज एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द बाटा। बाटा ने इनको सब दिया, दे हैव टू ओनली प्रोवाइड देयर लेबर ओनली। उनके सिर्फ कारीगर उससे काम कर रहे हैं, लेबर वर्कर काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेबर चार्जेस। तो इन्होंने प्रोडक्ट रेडी कर दिया फ्रेंड्स। किसने रेडी कर दिया? जॉब वर्कर ने प्रोडक्ट रेडी करके फिर से किसको रिटर्न कर दिया फ्रेंड्स? As soon as the products got ready, they have written to Bata India Limited. Now Bata India Limited will do the branding, sampling, packing, everything will be done by whom? Bata, and then they will sold to the customer. फिर वो किसको बेचेंगे फ्रेंड्स? कस्टमर को बेचेंगे। बट उन्होंने अपना काम करवाया किससे? जॉब वर्कर से। फ्री में नहीं करे फ्रेंड। जॉब वर्कर क्या चार्ज कर रहा है? लेबर चार्ज। Who will pay this labor charges? Bata India Limited will pay the labor charges. So who will deduct the TDS? Who will deduct the TDS then? 1 lakh rupees का पेमेंट करते हो, who will deduct the TDS? Bata India Limited will deduct the TDS. So Bata India Limited will not pay whole 1 lakh rupees. They will deduct TDS under section called as 194C. They will deduct the TDS under section called as 194C. So Bata India Limited is a deductor, and this they are basically called as friends deductee. They are basically called as friends deductee. Getting it? So friends, if we have we are paying labor charges, friends. We are paying what? Labor charges. कब labor charges हैं? कब pay करेंगे? When we are getting our work done from someone else. जब हम अपना काम किसी और से करवा रहे हैं friends, that is called as job work. So in case of job work, friends, the person who is working for us, they will not do our work free of cost. They will charge their labor charges. So while making payment for labor charges, and a TDS will be deducted under section 194. A TDS will be deducted under section 194C. Who will deduct TDS? Bata India Limited will deduct TDS. Hmm? Okay. Now, friends, uh, Bata India Limited every month they purchase raw material, they give it to job worker, and job work convert the raw material into finished goods, and they give it to again to Bata. ये प्रोसेस एवरी मंथ चलते रहता है। तो बाटा इंडिया लिमिटेड हैज टू पे लेबर चार्जेस एवरी मंथ। उनको एवरी मंथ पे करना पड़ेगा। हर महीने वो दूसरे से काम करा रहे हैं, एवरी मंथ दे हैव टू पे लेबर चार्ज। सो एवरी मंथ दे विल गेट इनवॉइस फ्रॉम जॉब वर्कर। जॉब वर्कर से हर महीने इनवॉइस आ जाता है कि इस महीने हमने आपसे इतना काम कराया, हमने आपकी कंपनी के लिए इतना काम किया है, और ये हमारा चार्जेस है जॉब वर्क का। तो बाटा इंडिया लिमिटेड विल गेट द इनवॉइस फ्रॉम जॉब वर्कर एवरी मंथ। एवरी मंथ उनको जॉब वर्कर से इनवॉइस मिलेगा। नाउ फ्रेंड्स, अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो से सपोज फ्रेंड्स, इनवॉइस नंबर हम ले लेते हैं, अमाउंट ले लेते हैं, यस, एंड इनवॉइस नंबर ले लेते हैं, अमाउंट ले लेते, डेट ले लेते हैं, एंड फिर अमाउंट ले लेते हैं हम लोग, हम्म, या मंथ ले लेते हैं बेटर। फिर डिसाइड करते हैं टीडीएस इज एप्लीकेबल और नॉट। सो फ्रेंड्स, वी आर बाटा, हम बाटा है, हम काम दूसरों से करा रहे हैं, अपना काम हम दूसरों से, वी आर गेटिंग अवर वर्क डन फ्रॉम जॉब वर्कर। So we have received invoice number 452 in the month of April. अप्रैल का अपने को इनवॉइस मिला, अमाउंट इज 25,000। लेबर चार्जेस का अपने को इनवॉइस मिला फ्रेंड्स, अमाउंट इज हाउ मच? 24,000। So let's decide whether TDS is applicable or not. बाटा इंडिया फ्रेंड, हमको लेबर चार्जेस का इनवॉइस मिला,
हमने दूसरों से काम कराए थे ना, 25,000 का अपने को जॉब वर्कर ने बोला हमारा ये महीने का इतना इनवॉइस है, इतना पे कर दो। तो यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करेंगे हम लोग, लेबर चार्जेस का है ये पेमेंट आएगा टीडीएस, ये 194 सी में टीडीएस आएगा। बट 194 सी क्या बोलते हैं, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए सिंगल पेमेंट एक इनवॉइस का वैल्यू कितना होना चाहिए। Should be how much price? More than 30,000. Therefore, no TDS. 25,000 is less than 30,000. Therefore, no TDS. सेकेंड फ्रेंड फिर से इनवाइस आया नेक्स्ट मंथ में, इनवाइस नंबर 500 मई में आया 29,000 का। अब बोलिए यहाँ पे टीडीएस आएगा फ्रेंड्स। 194 सी में लेबर चार्जेस का हम पेमेंट करें, टीडीएस इज एप्लीकेबल। तो सेक्शन क्या बोलता है, इनवॉइस शुड बी हाउ मच, मोर देन 30। तो 29,000 इज लेस देन 30,000, देयरफॉर टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल। अगेन फिर से इनवॉइस आया फ्रेंड्स जून मंथ में, इनवॉइस नंबर 625। वी गॉट इनवॉइस इन जून मंथ and value is 30,000. लेबर चार्जेस का इनवॉइस फिर से नेक्स्ट मंथ में आया फ्रेंड्स, एंड द वैल्यू इज हाउ मच, वैल्यू इज 30,000। सो टीडीएस इज एप्लीकेबल, टीडीएस इज एप्लीकेबल। सिंगल इनवॉइस, एक इनवॉइस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, मोर देन 30, नॉट एप्लीकेबल बिकॉज इट्स 30 ओनली, इट शुड बी मोर देन 30। Again we got the invoice in next month 700, invoice number 700, and July month का invoice है friends 20,000। टेल मी सीरियस आएगा फ्रेंड, नहीं आएगा, बिकॉज इनवाइस वैल्यू शुड बी मोर देन 30। 194 से क्या बोलता है, आप पेमेंट करो, पेमेंट करते हो टीडीएस तभी डिडक्ट करना है व्हेन योर वैल्यू ऑफ इनवाइस शुड बी मोर देन 30,000। So we have not deducted TDS on any invoice. Why, friends? Because all the invoices were less than 30,000. Either it were 30,000 or less than 30,000. Therefore, we have not deducted TDS. So, friends, when you make the payment, I mean, when you club all those invoices, जब आपने ये सारे invoices का total किया, कितना आ रहा है? We have received all these invoices from the same party. Friends, we have received all these invoices from the same party. And when we have clubbed all those invoices, जब हमने वो सारे invoices को clubbed किया, club करना मतलब friends aggregate बोलते हैं, aggregate add करना, aggregate करने पे कितना value आ रहा है, aggregate करने पे कितना value आ रहा है, 1,04,000। aggregate करने पे value कितना आ रहा है, 1,04,000। So friends, all the invoices, individually all the invoices were either less than 30 or 30, but aggregate is 1 lakh. So friends, as soon as aggregate, as soon as friends, as soon as aggregate of all the invoices is crossing, is more than 1 lakh, immediately TDS will be applicable. Immediately TDS will be applicable, friends. यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट वाला इनवॉइस है ना फ्रेंड्स, पहले के तीन इनवॉइस का टोटल लेते तो इट इज ओनली 84,000। व्हेन द लास्ट इनवॉइस वी रिसीव दैट टाइम इट एक्सीड्स द 1 लाख, 1 लाख हो गया ना फ्रेंड्स। as soon as aggregate value exceeds 1 lakh, immediately friends, immediately TDS will be applicable. So say suppose these job workers are individual, तो individual है तो how much TDS, individuals है तो funds how much TDS, 1%। Now 1% TDS will be applicable on aggregate value, friend. Yes, 1040. 1040 will be the TDS amount. Okay.
1040 we have to deduct it. अब कौन से इनवॉइस में से डिडक्ट करोगे फ्रेंड? इन विच इनवॉइस यू विल डिडक्ट? सी लास्ट इनवॉइस डोंट पे फुल अमाउंट. तो लास्ट वाला इनवॉइस आया था फ्रेंड, डोंट पे फुल अमाउंट. लास्ट वाली इनवॉइस में से टीडीएस डिडक्ट कर लोगे. हाउ मच यू विल पे? लास्ट इनवॉइस का कितना पेमेंट करोगे? जॉब वर्कर का 20,000 का इनवॉइस का 1040 डिडक्ट करके वी विल पे ओनली हाउ मच? 18,960. We will pay only how much, friends? 18,960. So, friends, for deducting TDS under section 194C, what we have to remember? What we have to remove, friends? Basically, we have to remember, friends, the aggregate. First of all, we have to deduct TDS if the value of one invoice is more than 30,000. Then only. If the value of one invoice is not more than 30,000, don't deduct TDS. But if the value of all those invoices is more than 1 lakh, सारे इनवॉइसेस 30,000 के नीचे है फ्रेंड. बट सब इनवॉइसेस का टोटल करने पे अगर एग्रीगेट कितना आता है, सब इनवॉइसेस का टोटल करने पे इफ एग्रीगेट इज हाउ मच फ्रेंड्स? 1 lakh, then TDS will be applicable, friends. If the aggregate value is more than 1 lakh, then TDS will be applicable. And so single value should be more than 30,000. Aggregate should be more than 1 lakh. For deducting TDS called as section 194C. For deducting TDS under section 194C. Right? Any doubt, friends? आप लोगों को कोई डाउट इसमें? Section 194C is important. Any No, doubt sir. in it? No doubts. Sir, my doubt is that कि हमको ये शीट कब मिलेगा? क्या बोल रहे हो? लाइक ये नोट्स प्रिपरेशन जो आप एक्सेल शीट पर बनाते हो ये कब मिलेगा? मतलब लाइक इससे क्या हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं? आई थिंक एक अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप है ना, तो यस सर. ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा. ठीक है. ऑल द मैं मटेरियल सर. यस सर. हाँ, ये वाला मैं भेज ही दूंगा. बाकी जो स्टडी का नोट्स है वो भी मैं भेजूंगा. ओके सर. I'll share it on the group. ओके. मैडम को मैं भेजूंगा. मैडम आप लोगों को भेजेंगी आपके ग्रुप में. Okay. तो shall we close for the day, friends? आज के लिए क्लोज करें हम लोग. Anything else, friends? और कोई डाउट? No. तो we'll close for the day. आज के लिए क्लोज करते हैं. We'll meet in the next week. Next week मिलते हैं and then we'll continue this TDS. Yeah. Thank you so much all of you friends. Probably from next week we'll start with TDS accounting start करेंगे, then TDS payment and then TDS return filing. ऐसे पूरा step by step चलेगा. So thanking you all friends. Have a great day everyone. Yes. Thank you so much.